name's Ranveer Alabadia. I'm 22 years old. I've been gymming for 3 years. I'm basically an engineering graduate, but I'm also a fitness trainer. 5 million subscribers. Oh my god. One of those videos I've genuinely not prepped for. Usually we have a lot of discussions internally in the team about what we should be speaking in videos. देखा आपने ये? I like the work Ranveer does through his podcast and content, but I love the way he has transformed his communication skills. He has been creating content for more than 8 years now and has created 4 successful businesses. So in my opinion, his ability to connect with people through his podcast and ask meaningful questions is the secret behind his success. I feel overall he is a great conversationalist. So in this video, we will decode Ranveer's communication style. What makes him confident, what makes him authentic, what makes him relatable. So let's begin. So रणवीर सिंह और रणवीर अलाबादिया में एक बात कॉमन है और वो है उनकी एनर्जी एंड एंथुजियाज्म. देखा है ना आप लोगों ने? Ranveer uses dynamic body language and expressive expressions to emphasize his points and he creates an engaging experience for us. आपने एक्सपीरियंस किया होगा. इसका एक एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है जब वो अपने पॉडकास्ट में किसी गेस्ट से मिलते हैं. He will welcome his guest with open arms or a non-verbal communication and open hand gesture signifies कि आप कितने ओपन हैं, कितने फ्रेंडली हैं, कितनी वार्मथ ऑफर कर रहे हैं. और पीपल यूज इट टू कन्वे हैप्पीनेस व्हेन दे मीट और सी ईच अदर. सो व्हेन यू आर हैप्पी यू पास ऑन योर एनर्जी टू द अदर पर्सन. इट मे लुक लाइक अ माइन्यूट थिंग बट इट मेक्स अ बिग डिफरेंस. ट्राई करके देखना. सो नेक्स्ट पॉइंट इज गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स दैट आर यूनिक. लोग हमारी वैल्यू करें, हमें अप्रिशिएट करें, ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है. और ये ह्यूमन नेचर है कि जब हमें कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो हमें अच्छा लगता है. तो जब भी रणवीर पॉडकास्ट करते हैं उसमें अपने गेस्ट को कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करते हैं. खासकर ऐसे कॉम्प्लीमेंट जो उनके गेस्ट अपने बारे में आमतौर पर नहीं सुनते. दे लाइक अच्छा ऐसा क्या, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग. क्योंकि अक्सर वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या ऐसे प्रॉमिनेंट पर्सनालिटीज़ को पॉडकास्ट पर लेकर आते हैं जो काफ़ी फेमस हैं. उनको कॉम्प्लीमेंट सुनने की आदत होती है, इसीलिए वो हमेशा कोई ऐसी बात बोलते हैं जो यूजुअल परसेप्शन से थोड़ी अलग होती है. इसका एग्जाम्पल मैंने जानवी कपूर के पॉडकास्ट में देखा. आप भी देखो. You have more depth than I thought that you did before meeting you. And I know that's slightly offensive for No, sure. not at all. But there's a lot of thoughts in there. So to give better compliments, you need to understand the person and it always comes from great observation skills. जब observe करते हो किसी को तभी आप उनके बारे में compliments genuinely दे सकते हो, सिर्फ fake नहीं. That's a great thing. Needless to say, it is better to avoid physical compliments, especially when talking to the opposite sex. Compliment someone's craft, someone's personality trait, or someone's the great quality. कर सकते हो. Next is now as he dives deep into the conversation, देखा होगा आपने, he is bold enough to ask difficult questions. He's like open about asking them and creating an environment in which the other person can comfortably answer the questions. Have a look. So do you look back at your life as great? Like early on in this conversation, you said that I wish, people don't have to go through what I went through. Could you talk a little bit about like the dark aspects of life as well, like whatever you've seen? जब मैंने ये देखा ना पॉडकास्ट तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि रणवीर संजय दत्त की पर्सनालिटी से थोड़ा इंटिमिडेट हुए हैं, लेकिन उन्होंने खुद को बहुत ही शांत और स्थिर बनाए रखा और वो सवाल पूछे जो वो चाहते थे. हैंडलिंग अ टफ कॉन्वर्सेशन इन अ टैक्टफुल मैनर, oh gosh, it's a brilliant sign of a good communicator. मैक्सिमम लोग तो अपने माइंड को खो देते हैं, पीस को खो देते हैं. तो अगली बार आप किसी से डीप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको कंफर्टेबल फील कराइए ताकि वो आपको अपने दिल की बात या इमोशन खुलकर आपको बता सके.
Now, the question is how to make other people comfortable around you. उसका एक तरीका है that is called as self disclosure. ट्राई करना. तो 1994 में एक स्टडी हुई जिसमें ये निकल कर आया कि अगर आप किसी के साथ अपनी लाइफ के एनेक्डोट्स शेयर करते हैं तो उस इंसान के आपको लाइक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. ऐसा हुआ है. This is one tool that most conversationalists use frequently. Or the benefit of using this tool is that people open up to you when you share something about yourself and they feel comfortable around you. ऐसा हुआ है आपके साथ? He uses this technique while having a conversation with Sanjay Dutt. I just want to tell you, even I've gone through alcoholism where I went for some sort of help for that. And I've had a very intense marijuana phase also. I'm very in a dharmic zone in life. I've spoken about it on the channel. So I do connect with what you're saying. Yeah. He was talking about Sanjay's past life, about drugs and other stuff. ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिनके बारे में लोग खासकर सेलिब्रिटीज़ खुल के बात नहीं कर पाते. इस मोमेंट पर रणवीर ने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर किए. इवेंचुअली संजय दत्त ने भी उस टॉपिक पर खुलकर बात करी. And that's a brilliant way to open up and have an open conversation. इस तरीके से आप उन लोगों से खुलकर बात कर सकते हैं जो थोड़ा रिजर्व रहना पसंद करते हैं और अपने बारे में ज़्यादा शेयर नहीं करते. However, you need to have certain boundaries. Self-disclosure isn't always straightforward. You need to know when it's right to share personal details and how to do it appropriately. I mean, कब बोलना, कितना बोलना है और कब नहीं बोलना, ये समझना बहुत ज़रूरी है. एक बिस्किट नहीं है, मैं बताना चाहती हूँ. आपके घर पे आए हो, चाय वाय कुछ नहीं, मतलब एक बिस्किट नहीं रखा है टेबल पे, क्योंकि नहीं तो चबाने की आवाज आ जाती माइक पे. I'm enjoying being ragged a little bit for some reason. Why am I enjoying this? I don't even know. I guess my ego has just died down in life. This was a moment. ये काफ़ी फनी था. थोड़ा रोस्ट वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन रणवीर ने काफ़ी स्मार्टली हैंडल किया. वो यहाँ अपनी फीलिंग को हाइड करने की कोशिश नहीं कर रहे थे. ऑन द अदर हैंड ही वॉज ओपन अबाउट शेयरिंग. आई गेस वो इस पॉइंट पर थोड़ा इंटिमिडेट हो गए थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी ह्यूमरसली इस मोमेंट को लिया. इस पॉडकास्ट में उन्होंने एक पॉइंट पर काजोल को बताया कि उनको ये पॉडकास्ट करना टफ लग रहा है. उसके बाद काजोल भी नॉर्मल हुई एंड दिस कॉन्वर्सेशन केम आउट रॉ एंड रियल. मुद्दे की बात क्या है कि जब लोगों से बात करो तो जो हो वो रहो. And the last quality of a good communicator is active listening. In most of my videos, I discuss this. Listening is not just about nodding your head, but also engaging. इसे हम लोग reflective listening भी कहते हैं. One way to show that you were listening is using the SSR technique. That is कि आप summarize करिए, आप share करिए, आप reflect करिए कि जो भी आपने सुना उसको आपने समराइज़ किया. द पर्सन फील्स कि हाँ आप उनको सुन रहे थे, आपने वो चीज़ उनसे शेयर करी. तो इट मीन्स कि जब आपने उनकी बात को सुना एंड आपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, या फिर आप एक गहरी सोच में चले गए कि हाँ दिस मेड मी थिंक. दैट वेज यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन वॉट यू हैव हर्ड. टूवर्ड्स द एंड ऑफ योर इंटरेक्शन मेक श्योर यू एंड ऑन अ हाई नोट, जैसा रणवीर करते हैं. Share a quick summary of what the other person said. That will help everyone to remember the entire conversation. देखो, sharing thoughts and feelings may lead to deeper and more meaningful conversations. Overall, to have meaningful conversations, you need to acquire the art of asking a good question and also being an attentive listener. That's all for today's video. We just learned about Ranveer more than what we had seen him on his podcast, a little bit deeper. If you haven't subscribed to this channel, do subscribe to see more analysis of some amazing people on the internet. Till then, stay awesome, stay productive.